Ladies and gentlemen, we stand tonight not merely on soil and stone, but upon linchpin of history. Let us hear the history and significance of Mao through the perspective of a 200-year-old witness, the baobab tree. Let me present in front of you a light and sound show narrated in the voice of the baobab tree and this mesmerizing town of Mao. Welcome, ladies and gentlemen. I am Baobab Tree, situated atop One Tree Hill, the highest point of Mao, the place that has been my home for more than 200 years. I was brought here by someone from the British Army, returning from overseas service, and I have been witnessing the transformation of the landscape around me ever since. I am here today to regale the same journey to you. For my roots drink from deeper wells than the memory of man. Those who stand beside me would realize that this hill is not just a vantage point of history, but also a watershed of geography. When the monsoon clouds burst over my branches, the rain that falls to my north journeys to join Chambal River emanating from the Janpav Hills, and the drops that slip down to my southern side find a different calling by merging into the holy Namata, the largest west-flowing river, traveling through 400-million-year-old Rift Valley between the Vindhya and Satpura ranges into the Arabian Sea. I stand tall today, overlooking this mesmerizing town, Mo. Now I invite you to listen to the voice of the town over which I stand tall and proud. किसी ज़माने में मैं होलकर साम्राज्य का एक छोटा सा गांव थी। विंध्याचल की गोद में, मालवा के पहाड़ी मैदानों के बीच, उत्तर में चंबल और दक्षिण में नर्मदा से घिरी हुई मैं सरल सा जीवन जीती थी। 18वीं शताब्दी में होलकर वंश का इस क्षेत्र पर शासन था। देवी अहिल्याबाई होलकर के न्याय और दूरदर्शिता से मालवा ने तरक्की, शांति और सांस्कृतिक गौरव का स्वर्णिम दौर देखा। मैं उसी गौरवशाली विरासत का हिस्सा हूँ, मजबूत भी, संवेदनशील भी। सन 1818 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में पराजय के बाद होलकर वंश का प्रभुत्व लगभग समाप्त हो गया। अंग्रेज़ों ने अपनी छावनी स्थापित करने के लिए मुझे चुना और मुझे मऊ के रूप में एक नई पहचान मिली। I saw tents rise where grass once grew. Soon barracks replaced canvas, and parade grounds replaced pastures. Among the early formations stationed here were units of the Bombay Native Infantry, and later, regiments such as the Royal Fusiliers and the Royal Artillery. Cavalry horses once grazed near my roots, and gun carriages rolled across the plains below. Bugles echoed at dawn. Boots struck rhythm on the parade square. Maps were drawn and redrawn as the empire expanded and consolidated. I watched British and Indian soldiers train here before departing for distant campaigns. Time deepened and the world wars cast their long shadows. Temporary wartime hutments appeared near my slopes. Wireless sets crackled. Searchlights swept the sky. Communication became the linchpin of any battlefield. 19वीं सदी में मैंने कई बदलाव देखे। अंग्रेज़ों ने मुझे पराधीनता की बेड़ियों में तो जकड़ा था, परंतु यहाँ शांति और सुव्यवस्था स्थापित करने में उनका योगदान भी रहा। चौड़ी सड़कों, परेड मैदानों और अनुशासित जीवन ने मेरी पहचान गढ़ी। धीरे धीरे मैं एक प्रमुख ब्रिटिश सैन्य केंद्र बन गई। समय के साथ विभिन्न व्यापारी और सामाजिक समुदाय यहाँ आकर बसे और मेरी आर्थिक व सामाजिक संरचना को समृद्ध करते गए। और फिर मैं उस अध्याय का साक्षी बनी जिसने स्वतंत्रता की ज्वाला को जन्म दिया। सन 1857 में जब स्वतंत्रता की पहली चिंगारी
मेरठ से भड़की। उसकी गूंज 1 जुलाई को मेरे प्रांगण तक भी पहुंची। मैं उस अशांत काल की साक्षी रही जब भारत ने स्वतंत्रता के लिए पहला व्यापक संघर्ष देखा। दशकों का संघर्ष, अनगिनत बलिदान, अडिग हौसले और हर आंख में एक ही सपना, स्वतंत्र भारत। अंततः यह सपना साकार हुआ और शुरू हुआ नए भारत का एक नया सफर। In 1947, the tricolor rose over this cantonment. The same parade grounds witnessed a new oath. The Indian Army inherited these barracks and infused them with sovereign purpose. While the seeds of Corps of Signals were sown into the land of Mao in 1920s, it emerged as Cradle and Forge of Signalers in 1946, when 3 signal institutes amalgamated to form Indian Signals Corps School, which was later redesignated as School of Signals in 1949. Training remained the soul of Mao. The infantry school found firm establishment here in 1948 and became one of the premier institutions shaping infantry doctrine and leadership. Young officers learned fieldcraft, tactics, and the art of leading men from front. Later, in 1971, the College of Combat was officially carved out of the infantry school. It became a crucible for operational thought and higher command preparation. In 2003, this institute was redesignated as the Army War College, where strategies were debated, doctrines were refined, and where war games unfolded across maps and models. The Tau matured into a center of professional military education across levels. Then in 1967, the School of Signals was redesignated as Military College of Telecommunication Engineering. I watched antennas rise like metallic branches reaching into the sky. Inside classrooms, officers studied not only courage but circuits, frequencies, encryption, and system architecture. They learned that an army without communication is like a body without nerves. They learned that victory depends on the certainty of a message delivered at the right moment. From Morse code tapping in lantern-lit rooms to secure satellite links crossing continents, from copper wires stretching across dusty fields to microwave towers punctuating the horizon, We've reached our final I've witnessed the evolution of the communication. Today, optical cables carry information at the speed of light beneath the soil I stand firmly on. Yet the principle remains unchanged. Clarity, resilience, redundancy, and trust. सन 2003 में मुझे फिर एक नई पहचान मिली, उस महान व्यक्तित्व के कारण जिन्होंने भारत के संविधान की रचना में प्रमुख भूमिका निभाई। और मुझे नाम मिला डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर नगर। जब मैं स्वयं को देखती हूँ तो अपने भीतर सदियों की झलकियाँ पाती हूँ। मैं देवी अहिल्याबाई होलकर का जाम दरवाज़ा भी हूँ, जहाँ थके हुए यात्री और व्यापारी शरण लिया करते थे। मैं सर जॉन मैल्कम द्वारा स्थापित छावनी का प्रतिबिंब भी हूँ। मैं पारसी, बोहरा, जैन, मारवाड़ी जैसे अनेक समुदायों का घर भी हूँ और असंख्य योद्धाओं की कर्मभूमि भी। मेरी मिट्टी में डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर भी पले बढ़े हैं और लगभग सभी सैन्य अधिकारी भी इसी मिट्टी से निकले हैं। मेरी गलियों में चाय, पोहे और जलेबी का जायका भी है और धूप में बहाए गए पसीने की बूंदों का नमक भी। मैं वर्षों की सौंधी सुगंध भी समेटे हूँ और अपनी संतान को देश के लिए समर्पित कर देने वाली माँ के आंसू भी। मैं बच्चों की ठिठोली भी हूँ और एक सैनिक का दृढ़ संकल्प भी। मैं होली के रंगों का उल्लास भी हूँ और खाकी का मौन भी। मैं सौहार्द भी हूँ, मैं युद्ध घोष भी हूँ, मैं मऊ हूँ।
From where I stand, I see continuity across centuries. I see young officers marching at first light. I see field officers debating operational art. I see senior officers designing strategies that will survive the fog of war. I have endured monsoon, drought, and storm. Like the institutions below me, I have adapted without surrendering my foundation. Roots deep in tradition that branch wide towards innovation. If you stand beside me and look over this cantonment, you will understand a quiet truth. Strength is not only in the weapons. Strength is in preparation. Strength is in cohesion. Strength is in integration. And above all, strength is in determination. I am the baobab tree of One Tree Hill. The weather might have withered away my leaves, but it can never touch my roots. I will bloom again to all my regal glory, sending a message to everyone who sees me, that storms may lash the earth, but those with deep roots do not fall. And as long as the soldiers train here, signals will flow clearly across domains, and this hill will remain witness to a signal that never sleeps.